हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ शालिनी अग्रवाल एंड वेलकम टू मार्केट डेस्क वेल्थ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स और साथ ही हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे एंड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। Yesterday, profit booking pulled down the Indian market amid weak global cues, dampening the domestic market sentiment. Nifty slipped 65 points or 0.3% to close above 22K at 22,032 after touching new record high of 22,124. IT stocks witnessed profit booking and Nifty IT index slipped over 1% after a rally of 7% in the last two trading sessions. तो चलिए अब देखते हैं 3 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 मोमेंटम स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ पे। HDFC Bank Q3 results. Profit after tax rises 34% year-on-year to Rs 16,373 crores. HDFC Bank reports strong Q3 results, beating ET Now poll. Net profit rose 34% year-on-year to Rs 16,372.54 crores. NII increased 24% year-on-year to Rs 28,471.34 crores, but fell short of estimates. Provision rose to Rs 4,217 crores. Core net profit margin at 3.4%. Pre-provision operating profit grew 24% year-on-year to Rs 23,647.30 crores. Balance sheet size for the December quarter at Rs 34.93 lakh crores. Total deposit raised 28% year-on-year to Rs 22.14 lakh crores. L&T Tech Q3 results. Net profit rises 13% year-on-year to Rs 336 crores. Revenue from operation during the third quarter jumped 12% year-on-year to Rs 2,422 crores. The same stood at Rs 2,157 crore a year ago. Mid-tier IT service company L&T Tech on Tuesday reported a net profit of Rs 336 crore for the quarter ended December, which is up by 13% compared with Rs 297 crore in the same quarter last year. Revenue from operation during the third quarter jumped 12% year-on-year to Rs 2,422 crores. The same stood at Rs 2,157 crores a year ago. Bank of Maharashtra Q3 results. Net profit rises 34% on year to Rs 1,036 crores. Bank of Maharashtra on January 16 reported a 33.61% on year rise in its October to December quarter net profit to Rs 1,036 crores on the back of rising net interest income and better asset quality. Operating profit has shown a growth of 27.32% on year to Rs 2,012 crores for the third quarter of the current financial year as against Rs 1,580 crores in a similar period last year. The same has improved by 4.77% on quarter. In the reporting quarter, net interest income grew by 24.56% on year to Rs 2,466 crores as against Rs 1,980 crore in a similar period last year. Bank of Maharashtra said in an exchange filing. The same was up by 1.39% on a sequential basis. आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग मार्केट डेस्क, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।